ଆସିବ କିର୍ଚଫ୍ସ ଲସ୍। କିର୍ଚଫ୍ସ ଲଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିର୍ଚଫ୍ସ ଯୋଡ଼େ ଲ ଦେଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କିର୍ଚଫ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କିର୍ଚଫ୍ସ କରେଣ୍ଟ ଲ। ଓକେ, ତାର ସ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା? ଇଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ the algebraic sum of current meeting at a point in an electric circuit is 0। माने गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट रे गोटे पॉइंट रे मीट करथुवा सबु करंट रो algebraic sum। ओके, एडी हमें वेक्टर कथा पढ़िनी। algebraic sum is 0। ओके, मैथमेटिकली summation of I is equal to 0। तार एक्सप्लेनेशन केमती ना, एठी धर गोटे पॉइंट होची हमरो O, ता गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट जहाँ भितर O होची गोटे पॉइंट, सेठी हमरो करंट मीट करछंती कि I1 I2 और सेठू आउटगोइंग करंट होचंती I3 I4 I5। ओके, रेजिस्टेंस भी सही हिसाब रे दिया जाइछि। तो consider 5 conducting wires through which current I1 I2 I3 I4 and I5 are flowing through the junction O। ओके, O होछि हमर पॉइंट at junction O, I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0। एटी तमे क्वेश्चन करिवो जे एटी ए दिटा को मु पॉजिटिव काई नोचे और I3 I4 I5 को नेगेटिव काई नोचे, कारण एटी हमें साइन कन्वेंशन यूज करथा। साइन कन्वेंशन किछि भी हे पारे, तमे निज हिसाब रे भी नै पारो। एटी मु कोन नै छी ना, इनकमिंग करंट टा को पॉजिटिव नै छी और आउटगोइंग करंट टा को मु नेगेटिव नै छी, किंतु तमे भी चाहिले इनकमिंग करंट को नेगेटिव नै परियो, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव भी नै पारिबो। सो बेसिकली हमर सब जगह करंट मिसी गले हमर टोटल आसीबो केते 0। तो एठी कोन I1 I2 I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5, hence net current at the terminal O is 0। okay, note हमर कोन ना, Kirchhoff's current law obeys the principle of conservation of charge। हला, एठी कंजर्वेशन में लिखि छी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एटा एक मार्क रे बहुत ही इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सब बेले पकई था। नेक्स्ट हमर आजो किर्चॉफ सेकंड लॉ, जोटा को हमें कहि तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, यार स्टेटमेंट कोन कहला ना, इट स्टेट्स दैट इन ए क्लोज्ड सर्किट द सम ऑफ EMFs, EMF कोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, is equal to the sum of products of resistances and the current flowing through them। मैथमेटिकली कौन, समिशन ऑफ I डॉट R I क्रॉस R जहाँ भी दे परियो I into R प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समिशन ऑफ E। E stands for EMFs। okay, if there is no EMF in the circuit, then summation of E is equal to 0, hence summation of IR is equal to 0। okay, explanation कौन देखि दवा। एडी गोटे सर्किट मु नौची, जोटा कि तमे निजे देखि दबो सर्किट केमती फ्लो करछि। E1 E2 E3 EMF जॉइन करछि आ I1 I2 I3 I4 I5 इत्यादि करंट गुडा मु नोट करछि। R1 R2 R3 R4 R5 दी पास करछि। टोटल करंट मु केते नै छी I बोली। ओके, तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ टा गोटे लूप रे काम करे। हमें एमती गोटे आंटी क्लॉकवाइज लूप नेबा एठी, से हिसाब रे ही मैं आंटी क्लॉकवाइज नौसी साइन कन्वेंशन पे। तमे चाहिले क्लॉकवाइज भी नहीं पारियो, देयर इज नो रॉन्ग। ओके, इन दिस इन द लूप ABHG, गोटे लूप को मु एक्सप्लेन करबी एठी। ABHG रे ए फर्स्ट लूप टा हमर जदी हमें देखिया, एठी I1 प्लस I3 ए दिटा गोटे डायरेक्शन रे जाउछंदी आउ I2 टा तांकर ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि। तेणु मु लिखली I1 R1 टा पॉजिटिव नेली, I3 R3 टा पॉजिटिव नेली, किंतु I2 R2 जेहेतु ए दि जनकर ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि, ताकु मु नेगेटिव नोची। तांकर प्रोडक्ट टा केते हबो ना 0 हबो। प्रोडक्ट इन द सेंस प्रोडक्ट ऑफ एडिशन। ओके, केते हबो 0। व्हाई, कारण ए जो ABHG लूप रे कोनोसी भी EMF नाही। अब हमें एठी कोन पड़ले, if there is no EMF in the circuit, then
summation of E is equal to 0, which means summation of IR is equal to 0. Okay. HCDC, ABCD, ABEF एगुड़ा सब तुम देखिपर एफबीसी रे हमर जेहेतु गोटे देखदेवी ईएमएफ अच्छी 3टा आमर लूपटा कौन एफबीसी माने बड़ लूपटा कथा चलछि एठी तो एठी कौन होउछि ना जोड़े करंट अछि I1R1 आउ I4R4 एगुड़ा कौन सेम डायरेक्शन रे अछंती दीटा को मु पॉजिटिव नै जिवि तो एठी मु नै गेली कौन I1R1 प्लस I4R4 तार जोगफल केते हबो E1 प्लस E2 प्लस E3 जेहेतु मु एठी 3टा EMF जॉइन करछि तमे किर्चॉफ्स लॉ रो एक्सप्लेनेशन कला बेले निजे निज हिसाब रे भी गोटे लूप तयारी कर परियो जेमति भी तम सुविधा हबो किर्चॉफ्स लॉ रो दीटा का लॉ पडियो तुमको एक्सप्लेन करिया पई दीटा का लॉ पडी पारे ओके पडले सेटा 7 मार्क्स रा आसीजो 7 और 5 मार्क्स तमरो जहां भी थिबो लॉन्ग क्वेश्चन रो सेटा हाईएस्ट मार्क पे आस पारे किंबा जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स रहता है तार न्यूमेरिकल भी आसी पारे ओके नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन रे हमर कोन आस पारे नोट आस पारे जे किर्चॉफ्स सेकंड लॉ ओबेज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेकंड लॉ ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओके नेक्स्ट हमर होची व्हीटस्टोन ब्रिज नेक्स्ट हमर व्हीटस्टोन ब्रिज कौन कहे व्हीटस्टोन ब्रिज पे फास्ट हमको कौन करिया पड़ियो ना व्हीटस्टोन ब्रिज रो डायग्राम होची बहुत ही इंपोर्टेंट वंस तमे डायग्राम टा बुझी जिवो तमे एग्जाम रे बहुत ही आराम से लिख परियो फिजिक्स रे जे कोनोसी क्वेश्चन डायग्राम कर दबो बहुत ही इजी ही जिवो लिखिया पे तो एठी जो डायग्राम टा करछि ताको ही मु एठी एक्सप्लेन करि के लिखि छी द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस P Q R and X एठी गेला P एठी गेला Q R and X okay चारटा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन फोर आर्म्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD होची गोटे स्क्वायर जहार चारटा आर्म रे मु PQRS RX चारटा रेजिस्टेंस नै जी out of which resistance X is unknown ये जो X रेजिस्टेंस टा unknown होटे hence PQR टा हमें जानी छे then one EMF E is connected across the points A and C A आउ C भितरे गोटे EMF मु देछि एठी E ओके एटा होछि EMF E and a galvanometer is connected across points B and D एठी गोटे galvanometer देछि B and D ओके galvanometer रो यूजेस हमें नेक्स्ट चैप्टर रे पढ़िया galvanometer कोन पे यूज हुए ना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड इट्स डायरेक्शन को मापिया पई galvanometer हमें यूज करी थाउ let I1 I2 I3 I4 and IG are the current passing through P R Q and X and the galvanometer respectively okay I1 कहा दे पास करछि I1 पास करछि P I2 हैला R I3 हैला Q I4 हैला X IG होछि galvanometer दे पास करथो करंट रा अमाउंट okay next and Rg is the resistance offered by the galvanometer माने galvanometer रो जो स्वतंत्र रेजिस्टेंस है ताको हमें डिनोट करछे Rg बोली तमे डायग्राम टा कर दियो खाता रे नेक्स्ट तमे एठी बुझिया को इजी हो कारण मु एठी आ डायग्राम टा तो देखै परिबिन ना ओके सो नाउ अप्लाइंग Kirchhoff's first law to junction B and D we get I1 is equal to I3 plus IG I2 plus IG is equal to I4 तमे डायग्राम टा करथियो ताकू ही देखि कि लिखुथो हला गोटे स्पेशल कंडीशन जेतोले कि galvanometer दे कोनोसी अमाउंट रो करंट पास करबनी ताकू ही हमें कोन करथौ when the bridge is balanced condition of Wheatstone bridge okay सेतेबेले कोन Ig is equal to 0 माने galvanometer दे कोनोसी करंट पास करू नाही so in the balanced condition
I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4. Equation 3 and 4 जोटा कि आमे 1 and 2 रू पाउछे सेठी IG जगह रे आमे जदी 0 पके दवा एठी IG जगह रे 0 पके देले हमको आसबो I1 is equal to I3 I2 is equal to I4 सेटा को आमे इक्वेशन 3 and 4 दोजे now applying Kirchhoff's second law to the loop ABD हैला डायग्राम देखि परथो तमे I1P plus IGRG minus I2R is equal to 0 नेक्स्ट आमे जेहेतु IGRG टा को आमे कोन करछे ना IG टा हमर जेहेतु 0 ए पूरा टर्म टा ही 0 होई जिवो तो I1P minus I2R जोटा बळिवो सेटा इज इक्वल टू 0 सेठे आमे कोन बोलछे I1P is equal to I2R सेटा को आमे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले कोन हो जिवो I1 by I2 is equal to R by P एटा को हमर हो जिवो इक्वेशन 5 Similarly, applying Kirchhoff's law, Kirchhoff's second law to the loop BCD, we will get I3Q minus I4X is equal to IGRG. Same thing, IGRG टा हमर 0 ही जो तो हमर on calculating आसीबो केते I3 by I4 is equal to X by Q जोटा को हमें दे दवा equation 6. Thus, from the equation 3, 4 and 5, 6, we will get I1 by I2 is equal to I3 by I4, which means R by P is equal to X by Q. This is the case for the balanced condition of Wheatstone Bridge. जेतबेले कि तार मझी रेजिस्टेंस दे कोनोसी करंट पास करू नथिबो ओके नेक्स्ट आमे गोटे वीडियो करदवा जोथरे आमे रेजिस्टेंस रो न्यूमेरिकल गुडा करिया गोटे पर्टिकुलर वीडियो रे सेति बेलको यार आमे न्यूमेरिकल्स गुडा भी कवर करिया ओके सो x टा हमर जेहेतु अननोन रेजिस्टेंस आमे ताको केमते फाइंड करिया x इज इक्वल टू pr by q एडू क्रॉस मल्टीप्लाई करिकी तमे एठी आसी पारियो ओके